and we can enjoy the rest of the night among the audience. Wow, that's pretty smart coming from you. So let's go with that and please welcome our co-anchors. The very energetic Asad Ali and the very beautiful Ankita Mishra. Hello audience! Your speed-fast presence as an anchor is truly appreciated. Give a big round of applause for Anushka and Ashutosh! Ladies and gentlemen, get ready as we are in the midst of the show. Unbelievable evening. We are at Sandipotsav Cultural Night just for you people out here. Oh my God! You all are looking so shining and blushing. Hello, namaskar, abhinandan, swagatam, suswagatam, adab, shasriyakal, assalamu alaikum. A very, very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful, auspicious day that brings together so many sweet and special people like you. How are you all? Make some noise. I am Ashad Ali, your current anchor for this beautiful evening. Give a big round of applause. First of all, a very thanks to all the dignitaries presented out here. With huge respect, they gave their precious time for us. Thank you so much. I think I'm missing someone. Yes, my co-anchor. For this beautiful evening, I would like to invite on stage a very energetic co-anchor, Ankita Sharma. For you people, give a big round of applause. Remarkable occasion. Thank you everyone for being here and making this event truly special. Hello audience, you know that you are very important to the show and I am very glad to see a huge audience here. Are you having a good time? I am Ankita Mishra and I welcome you all to the wonderful evening. A sincere thanks to our esteemed dignitaries for taking the time to join us today. Their presence is truly appreciable. हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद लेकर और आज की शाम आई है बहुत ही खास जो लेकर आई है हम सबको यहाँ एक साथ लेकर. Ankita, how do you prepare yourself mentally before a Nukkad Natak performance? I like to focus the message we are conveying in my channel and energy into creating a powerful impact on. Esteemed guests and friends, we are thrilled to have you join us for this beautiful performance that aimed at shedding a light on important social issues and inspiring changes. Presenting you a Nukkad Natak by Suraj and his group. Give a big round of applause. Bravo, that was an outstanding performance. Give a big round of hand. यार कॉलेज लाइफ, दोस्त, जिंदगी, इन सब की बात ही अलग है और इन सब में सबसे खास है लड़कियां. कुछ सुनाना चाहता हूं, ध्यान देना. फेसबुक सा फेस है तेरा, गूगल जैसी आंखें, और इंटर करके सर्च करूं तो बस तुझको ही ताके. रेडिट जैसे गाल है तेरे, स्नैपचैट से होठ, बल खाकर जब तू चलती है तो लगे दिल पे चोट. और इंस्टाग्राम पर देख के डीपी हम सब ऐसे खोए, इंस्टाग्राम पर देख के डीपी हम सब ऐसे खोए. तू तो हो गई पास, अपना हो गया मोए मोए. अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए. अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए, जोरदार तालियां हो जाए. All right everyone, you know
We Indians are known for our cultural heritage around the world. We love our tradition very well. We all know that Sanskrit is one of the oldest and spiritual languages in Hinduism. But, I do have a question for you people that have you ever heard the word Namami? Namami means, is a word which means bow down, used in reference to Lord Vishnu, one of the major deities of Hinduism. Presenting you Namami Namami dance by Ritika and her group. Give an outstanding round of applause. Impressive! Your performance was absolutely mind-blowing. कानों में खनकती है खूबसूरत बालियां, कानों में खनकती है खूबसूरत बालियां, और मजा तो जब आता है जब महफिल में बजती है जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हो जाए। Today we have seen a lot of performance out here, as you had seen Nukkad Natak and dance recently. What else do you want to see? I just wanna drown into magical sound which heals the heart. Okay then, it's the time to be swept away on a journey of pure musical bliss. So ladies and gentlemen, welcome to enchanting evening of music and melody. Alright then, presenting you an outstanding singing performance by Akhil Anand. Please show your appreciation with a resounding round of applause. What an incredible and melodious singing. I was very overwhelmed to listen this. बारिश ऐसी हो कि समुंदर में उफान आ जाए, कि बारिश ऐसी हो कि समुंदर में उफान आ जाए, और तालियां ऐसी बजे कि महफिल में जान आ जाए। जोरदार तालियां हो जाए। Without beating around the bush, we all knew that we are in the modern society and technology, where English is very dominating and holds immense importance in today's globalized world. Like they are communication, access to knowledge and information, higher education. Furthermore, to continue this, I'd like to call on a speech by Priyanka Jaiswal on a stage. Give them a big round of hand. एसोसिएटेड विथ लॉर्ड महावीरा। बर्गर पिज्जा खाने वाले क्या समझेंगे प्यार को, बर्गर पिज्जा खाने वाले क्या समझेंगे प्यार को, जिसने मुजफ्फरपुर का लीची नहीं खाया वो क्या समझेंगे बिहार को। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस माटी में जन्म लिया उस माटी की मैं आभारी हूँ, जिस माटी में जन्म लिया उस माटी की मैं आभारी हूँ। स्वर्ग से सुंदर है बिहार मेरा और गर्व है कि मैं एक बिहारी हूँ। थैंक यू। Thank you so much Priyanka Jaiswal for connecting all of us with Bihar. पलकों उठाकर सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, क्योंकि इस शानदार सा प्रोग्राम हम आपके नाम करते हैं। What do you want to see next? Anything which is full of energy and joyous. Direct your attention to the spotlight, where dancers will showcase their skills and passion in a solo dance that will leave you spellbound. With each movement, dancers paint a canvas of emotion, a solo dance of expression to fulfill the empty stage. With the energetic dance performance, I would like to present solo dance by Gyan Gaurav and his group. Give a big hand for them. Phenomenal! You are a true artist. Your dance moves are really amazing. मौजूद हो आप सब यहाँ तो महफिल को सजा दीजिए, मौजूद हो आप सब यहाँ तो महफिल को सजा दीजिए। खुशनुमा हो जाएगा माहौल यहाँ का। एक बार आप सब तालियां तो बजा दीजिए, जोरदार तालियां। Ashad, the stage is set and the lights are dim and our singers is ready to take down on a journey through their mesmerizing vocals and hard lyrics to fill this environment with melody and emotion. ये तालियां कैसे रुक गई? अभी तो सैलाब आना बाकी है। ये तालियां
कैसे रुक गई? अभी तो सैलाब आना बाकी है। अरे थक गए क्या? अभी तो पूरा प्रोग्राम आना बाकी है। Right away, we need to call someone with melodious voice. For that, I would like to call for singing performance by Mahesh Kumar. Let's give them an applause. Hello, check. Wow, what a mesmerizing performance. Everyone enjoyed it. All right. Ankita, but I think that we had seen a lot of performance recently. It makes me lighten up. I am feeling very energetic and heated. So what? I am very willing to watch the heated and energetic performance once again. Why not you considering it? Of course, on your demand, we also had a trio dance, which makes the environment light. So the audience, be ready. We are going to call a trio dance by Roma and her group. Let's make some noise and give them a big round of applause. They won't forget. Impressive! Your performance was absolutely stunning. जैसे जमी पर चमकते हैं जुगनू, जैसे जमी पर चमकते हैं जुगनू, आसमां पे चमकते हैं तारे, कुछ ऐसी ही छटा बिखेर रहे हैं आज के परफॉर्मर्स हमारे. Before announcing something, I am seeing that you all are being faded. मैं कहना चाहूँगा कि मन मचल के मोर होना चाहिए. संदीपोत्सव में परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए. सुनाने तो हम बहुत कुछ आए हैं, लेकिन आपके तालियों में भी तो थोड़ा जोर होना चाहिए. हेलो ऑडियंस. संस्कृति के रंग भारतीय संस्कृति के संग. भारत विभिन्न भाषाओं का देश, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वर्गों का देश, अपनी असीम सभ्यता से भरपूर, पूरे विश्व विख्यात. यहाँ की सभ्यताओं को दुनिया ने लोहा माना है. सबसे प्राचीन इमारत से लेकर सबसे प्राचीन धर्मों का यहाँ वास है. कुल मिलाकर हमारा भारत एक स्वर्ग है जिसमें बसना हम सभी का सपना है, और यहाँ लगता हर कोई हमको अपना है. So the audience is the only time to call the most awaited performance of today's night, the cultural ramp walk for you people. Please put Give your a hands big together and round give of them a round of applause. applause. Wait. Sorry for the glitch. पहले फर्स्ट में आ का सुन रुक. Now I'd like to call on stage singing performance by Roshni Kumari. Song name आए हो मेरे जिंदगी. What a wonderful singing. Now is the time to call the most awaited performance of today's night, the cultural ramp walk for you people. Please put your hands together and give them a resounding round of applause. Now let's welcome with a great round of applause for our first couple of ramp walk, Preeti Poddar with Rahul Kumar. That's like a absolutely outstanding performance. यार देश का कल्चर अलग बात है. देश की बात में देशभक्ति की बात ही अलग है. इसी पर मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना. जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना. लहू से मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना. Everyone, we know that we have came across from many places to get quality education to make our journey of life vibrant. But I do have a question for you people. Those who don't belong to Mithila region, when you arrived at Madhubani, तुमने सबसे पहले क्या देखा? मैं अपने बारे में बताता हूँ.
जब मैं पहली बार मधुबनी स्टेशन पे पहुंचा तो सबसे पहले मैंने यही देखा, अहाँक मधुबनी में हृदय से स्वागत अछि। अपने आप में मिथिला बहुत पावन और असीम संस्कृति का केंद्र है। इसी मिथिला की धरती पर मिथिला की एक प्रस्तुति। जॉर्ज जटिन एकटा नृत्य दल नहीं अछि, ई मिथिलाक संस्कृति के धरोहर अछि। जॉर्ज जटिन में पति पत्नी के बीच के प्रेम के देखायल जाइत अछि। एहि नृत्य के माध्यम से पति पत्नी के बीच के एक दूसरे से नोक झोंक, रुसबाक, मनेबाक के देखायल जाइत अछि। I would like to call Georgette dance by Aarti and her group. Give a big hand for that. अहाँ सबकी प्रस्तुति देखला के बाद हमर सबके मन गदगद भ गेल। As we had taken a lot of time on stage and it needs to be retreat, but जाते जाते कुछ शायरियां वगैरह हो जाए। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों हैं। तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में है। मैंने खोया है हर अपनी प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। इस जहां में कोई खास नहीं मेरा, तू कबूल कर, मैं अपने गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। शुक्रिया। Thank you so much everyone for being with us. And thanking all the esteemed dignitaries to be with us. Now giving the stage to the very beautiful pair of anchor, Sudarshan and Priyanka. Give them a resounding round of applause.